In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that everyone is in good health. Well, students, I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you first of all day and date. So dear students, today is 14th of January 2021 and day is Thursday. Let's move ahead to see the topic of today's lecture, and it's unit 11, my side of the mountain. Which unit? Unit 11, my side of the mountain. If you remember that in my previous lecture yesterday, I tell you everything like the summary of this unit. So I hope that you must be very familiar with the theme of the my side of the mountain. And the topic of today's lecture is words, meaning and sentences related to the unit 11. You can see here that if you remember that my side of the mountain is actually comprises on the main character who is a teenage boy, okay, who is a teenage boy who decided to run away from the New York City and start to from his home in the New York to and start to live in the Catskill Mountains. If you remember the hammock and the cozy room he had made like beneath the mountains under the hammock tree, तो वहाँ पे उसने cozy room बना लिया था which was actually made of the wood actually, okay. और उसमें हिरन की जो खाल थी वो उसने skin of the deer he used over there for the sleeping bed, ठीक है. So because there was too much snow outside everywhere, so he was a bit frightened as well, but he made many friends as well, okay. वो friends कौन से थे जो कि आपको पता है कि उसने विजल और बैरन को friend बनाया था, ठीक है. And he was very happy over there, and then but he gradually learns also how to survive in the Catskill with the help of frightful and trained to catch food for him. Like उसने कौन कौन से food कैच किए थे, कौन कौन से फूड पकड़े थे, कौन कौन से फूड सेव किए थे, बिकॉज देर वॉज टू मच स्नो ओवर देर वॉज टू मच लाइक द वेदर वॉज ऑफ स्प्रिंग एंड और जो कोल्ड थी वो बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर वॉज इन -डिग्री. दैट्स वाई ही सेव्ड मैनी थिंग्स फॉर एडिबल, ओके. दैट्स वाई he was a bit frightened as well, but लेकिन उसने he did everything very nicely, okay. At the end he stays in his room which is made of wood actually. When spring comes he realizes that he cannot live in the woods together, but he was ready to rejoin the real world as well, okay. So we are moving to the words meanings. First of all, for that students, you have to take out your notebooks as well, and please draw the margin line and beautifully write down the date and along with the unit number, unit name, and then come to the topic, okay, which is words meanings. You can see here words meaning in front of you. Number one is slats. Slats meaning is planks. प्लैंक मतलब होता है अ लॉन्ग थिन पीस फॉर एक्सरसाइज, ठीक है. यानी कि अगर सम ऑफ यू हु नोज अबाउट द योगा और द एक्सरसाइज, तो आपको पता चलेगा कि प्लैंक अक्सर होती है एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है. उसको हम करते हैं यानी कि वो एक पीस होता है उसका, ठीक है. अ लॉन्ग थिन पीस फॉर एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड प्लैंक और स्लैट्स. हेमलॉक ट्री, नंबर 2 इज हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री मीनिंग इज लार्ज ट्री, ठीक है, जहाँ पे उसने रहना शुरू किया था, लार्ज ट्री. नंबर 3 इज़ हाइड. हाइड मीनिंग इज़ टू कीप आउट ऑफ साइट, अपने आप को ओझल कर देना, नज़रों से छुपा लेना. नंबर 4 इज़ विजल. WEASL विजल. विजल मीनिंग इज़ अ स्मॉल मैमल, यानी कि छोटा सा जानवर होता है, ठीक है, विजल, जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, विद हुम ही बिकम द फ्रेंड ऑफ हिम. नंबर 5 इज चिकाडीज. चिकाडीज मीनिंग स्मॉल बर्ड्स, छोटे छोटे से परिंदे, ठीक है. अब देखिए, नंबर 1 इज स्लैट्स, प्लैंक्स, हेमलॉक ट्री, लार्ज ट्री, हाइड, टू कीप आउट ऑफ साइट, विजल, अ स्मॉल मैमल, चिकाडीज, स्मॉल बर्ड.
Now we are moving to the word sentences. Okay, now we are moving to the word sentence. For word sentences you have to also move to the next page. Don't write word sentences at the lower space which left with the 3 lines. So please, or for rest of the sentences you have to again move to the next page. That's why I'm asking you to direct jump to the next page. Okay, for the word sentences वहाँ पे जाके टॉपिक दें अपना, word sentences लिखें और नीट एंड क्लीन अपना काम करें. ऑलराइट. Number 1 is sunlight. Sunlight. The sunlight was very bright. You can make your own sentence by on your creativity. Okay, आप teacher वाले भी लिख सकते हैं. If you want to make your own sentence then you can do it, but make sure that you are writing a very correct sentence. Okay, the sunlight was very bright. यानी कि जो sunlight थी, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा bright थी. Number 2 is smoking. Ali has quit smoking for his health. अली ने स्मोकिंग क्विट कर दिया अपनी हेल्थ के लिए. नंबर 3 इज़ कवर्ड. शी कवर्ड हर माउथ विथ फेस मास्क. उसने अपना माउथ कवर किया फेस मास्क के साथ. मूव टू द नेक्स्ट. नंबर 4 इज़ गैदरिंग. आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ. आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस एज वेल. I am gathering information. Number 5 is temperature. I seem to have a temperature. मुझे लगता है कि temperature हो रहा है. या फिर you can make your own sentence like the room temperature is below 20 or whatever you want to write. ठीक है. I seem to have a temperature. मुझे लग रहा है कि मुझे temperature हो रहा है. ठीक है. Now dear student, these are I guess yes 5 sentences. Sunlight, smoking, covered, gathering and temperature. You have to write it down on your own creativity as well. ठीक है. ये तो मैंने आपको लिख के दे दिया एज ए सैम्पल. अगर आप अपना ही लिख सकते हैं तो लिख लें. ठीक है. होमवर्क इज़ दैट डू बुक वर्क. अब आपको बुक वर्क करना है. बुक वर्क इज़ वेरी इजी पीजी. एक्चुअली आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ. लेट मी सी इफ आई हैव द बुक. सो आई मेंशन यू विच वर्क यू नीड टू डू. एक्चुअली yes, if you come to the page 125 there is a B part. आपने इसको चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स टू नाउन्स. ठीक है. जैसे क्रिएट है तो क्रिएटर बना देना. डिस्कवर है तो चेंज इट इनटू वर्ब, और वर्ब है तो उसको नाउन कर देना. डिस्कवर हो जाएगा, इन्वेंटर हो जाएगा. फिर देन कम टू द सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द क्लॉजेस अबव. आई वुड बाय दिस हाउस इफ़ आई हैड मनी. ठीक है. ऊपर क्लॉजेस दिए हुए हैं. क्लॉजेस दिए हुए जिससे आपकी सेंटेंस पूरे हो जाएंगे. द रैट कुड गो थ्रू द होल इफ़ इट वॉज अ लिटिल बिगर. ठीक है. फ्रॉम दिस वे यू कैन डू कंजंक्शन क्वेश्चन एज वेल. ठीक है. पेज 125 126 करना है. ओके, दैट्स ऑल. द एक्चुअली आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुकलेट. इट्स वेरी इजी पीजी वर्क्स टू मेक द क्लॉजेस आर ऑलरेडी गिवन इन द पेज 125, so you can do it very easily. Take care of yourself. Allah Hafiz. Remember me in your prayers. Stay blessed.